Assalamu alaikum. Welcome to Fahameurbic YouTube channel. Today we are going to learn the Arabic numbers from 11 to 20 according to their masculine and feminine form. When these numbers are used in a sentence, then the number will masculine if Tameez comes in masculine form, but the number will feminine if Tameez comes in feminine form. For example, if Tameez comes in masculine form, then the number 11 will be أحد عشر أحد عشر أحد عشر. But if tamyiz comes in feminine form, then the number 11 will be إحدى عشرة إحدى عشرة إحدى عشرة. In masculine form, number 12 will be إثنى عشر إثنى عشر إثنى عشر. But in feminine form, number 12 will be إثنتا عشرة إثنتا عشرة إثنتا عشرة. In number 11 and 12, both parts of numbers come in similar gender. यानी अगर तमयीज़ मुज़क्कर है तो अहदा अशरा के दोनों जुज़ भी मुज़क्कर होंगे, और अगर तमयीज़ मोनस हो तो इसके दोनों जुज़ भी मोनस होंगे, यानी इहदा आशरवाता होंगे। इसी तरह मुज़क्कर तमयीज़ की सूरत में इतना आशरा के दोनों जुज़ भी मुज़क्कर और मोनस की सूरत में दोनों जुज़ मोनस होंगे। बट फ्रॉम नंबर 13 to 19 द पैटर्न विल बी डिफरेंट. इन दीज नंबर्स फर्स्ट पार्ट ऑफ नंबर कम्स इन मैस्कुलिन फॉर्म and second part of number comes in feminine form if tamyiz is feminine. But if tamyiz is masculine, then the first part of number will in feminine form and the second part of number will in masculine form. For example, if tamyiz is in masculine form, then the number 13 will be ثلاثة عشر. Its first part is feminine and the second part is masculine. But if tamyiz is in feminine form, then the first part of this number is masculine and the second part is feminine. For example, ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة. In masculine form, the number 14 will be أربعة عشر أربعة عشر أربعة عشر. But in feminine form, the number 14 will be أربعة عشرة أربعة عشرة أربعة عشرة. In masculine form, the number 15 will خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر. But in feminine form, the number 15 will خمسة عشرة خمسة عشرة خمسة عشرة. The number 16 in masculine form will ستة عشرة ستة عشرة ستة عشر. But in feminine form, the number 16 will be ستة عشرة ستة عشرة ستة عشرة. In masculine form, the number 17 will be سبعة عشرة سبعة عشرة سبعة عشر. But in feminine form, the number 17 will سبع عشرة سبع عشرة سبع عشرة. In masculine form, the number 18 will be ثمانية عشرة
ثمانية عشر ثمانية عشر. But in feminine form, the number 18 will be ثمانية عشرة ثمانية عشرة ثمانية عشرة. In masculine form, the number 19 will be تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر. But in feminine form, the number 19 will be تسعة عشرة تسعة عشرة تسعة عشرة. The last number is 20. The number 20 will be same whether it is in masculine form or in feminine form. In Arabic, the number 20 is عشرون عشرون عشرون. This video ends here. Hope you like this video. If you like this video, then share it and also subscribe this channel. Jazakumullah.